Hey everyone, this is Sahitya. Welcome to this channel. You all know that Hacktoberfest is going on, and it's very good opportunity for you guys to contribute in open source. There are several projects in open source in Hacktoberfest, so you can take part in that and be open source contributor, right? So in that scenario, I would like to show you how we can contribute, how we can find some good projects, right? So in this video, I will clear your all doubts regarding Hacktoberfest. There are several questions like what kind of pull request you have to create, right? DSA projects are allowed or not, right? There are several things. So you have to uh, you have to contribute, you have to learn and then contribute. There are several problem statements, right? There are several projects, how you can find, how you can contribute. So in this video, I will clear your all doubts step by step. So let me present my screen and I will show you how you can contribute. So there are I will explain you some few steps. First is introduction and second one is hands-on session. So keep watching this video, right? So let me present my screen and I will, this is the Hacktoberfest website, and over here I will present my screen and I will explain you in details, right? So just wait a second. Cool. I think my screen is properly visible. So welcome to the world of open source. So what is open source? Open source means the source code is freely available in GitHub or any other platform. Main thing is the सोर्स कोड. दैट मीन आप एक प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं एंड उस प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो सबके लिए ओपन है एंड यू कैन चेंजेस, right? If you want to change something, if you want to add some projects, then you can add, right? So there are difference between open source softwares and closed source softwares. So what is the major difference between open source and closed source software? So basically closed source means the source code is hidden from us. Cool. That means I am using Windows. The source code of Windows system is hidden, right? Mac and other softwares source code is hidden. But in case of open source like Ubuntu Linux, Android, Chromium, Firefox, the source code is freely available. If you want to contribute and if you want to change something in that project, you can. But you have to take a permission from maintainer, and then you can contribute. So if you want to contribute in Linux, Kubernetes and many more stuffs, then you have to go in uh, Google Summer of Code website, and you can find many more projects in Google Summer of Code website. Okay, cool. So today's introduction, this is my previous PPT. Okay, so let's talk about myself. So I am Sahitya Roy, and if you want to connect with me, you can connect with me via LinkedIn, via GitHub. So this is my LinkedIn account. You can connect with me. This is my GitHub profile. You can connect with me. There are several projects. There are several repositories in my GitHub account. So if you can contribute in my projects, then you can. Right? Most welcome to my projects. Right? Okay. So let's back to my presentation once. Okay, just give me a second. Just present my screen again. Awesome, awesome. Right, cool. So let's jump into the popular open source events. There are Google Summer of Code, Google Summer of Doc, Organization Founder, and Gulfskip Summer of Code, and many more open source contribution, outreach. And now we will be focusing on Hacktoberfest because Hacktoberfest is going on, right? Awesome. Cool. So why contribute to open source? Code more, learn more. That means जितना भी कोड करेंगे उतना आप सीखेंगे. That's the main thing. You all know, right? So paying to the community. That means open source आपको community के लिए काम करना होता है. That's mean community work. आप किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. That means कम्युनिटी को आप कुछ दे रहे हैं. That's the main thing. Global recognition via prestigious open source events like Hacktoberfest का एक टी-शर्ट आपको मिलेगा. बोलते हैं ना कि रिकॉग्निशन आपको मिलेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स, राइट? एंड इट्स नॉट अबाउट द कोड, इट्स अबाउट द कम्युनिटी. दैट्स द मेन थिंग.
राइट, ऑसम। सो एक ड्रॉबैक मैं बोल देता हूँ, अगर आप फुल्ली बिगिनर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, छोटा छोटा इशू में काम करेंगे, बट आपका तो पुल रिक्वेस्ट होगा ना, दैट्स द मेन थिंग, स्टार्ट करना होगा। ऑसम। एंड पीपल के साथ नेटवर्क करना होगा, नेटवर्क इज नेटवर्क, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप नेटवर्क करें, राइट? So what is the difference between Git and GitHub? So many of you think that Git and GitHub is similar things, but there is a big difference in Git and GitHub. So what is Git? Git is a version control system. It can be used with various tools or locally on your computer to help you keep tracking of changes in your code projects. So that's mean you can track your changes, you can upgrade your system, and you can back in your previous system. That's mean it's keep checking your version. That's mean version control system. Let's say you have a application that have 2 3 version like 1.1.1, 1.1.2. So and you want to release 1.1.3, but there is a bug in 1.1.3, then you have to come in 1.1.2. So what you have to do, it's very difficult for you to back in previous one when, and then काम में आता है git, जो आपको वर्जन को कंट्रोल करके देता है कि कहाँ पे किस टाइम पे चेंजेस हुआ, कौन सी वर्जन पहले था, दैट्स द सिनेरियो। सो गिटहब क्या है? GitHub is a cloud platform where you can upload your codes. You can collaborate with other developers. GitHub uses Git for version control, right? So simple thing is Git आपको एक hosting देता है जहाँ पे आप अपना कोड को पुश करते हैं, एंड दूसरा रिपोजिटरी पे जाके आप दूसरा जो डेवलपर्स है उन लोग के साथ कोलैब करते हैं। दैट्स द मेन थिंग। Awesome. So first thing is you have to install Git in your system. For that, there are several systems: Mac OS, Linux, or Windows. There are several steps for Mac, Linux, and Windows. So you can follow the steps. If you want to install, then just Google it and you can find the link. Right? So great. I think Git installed है आपके system पे. So let's get started with the Git. For first thing is you have to configure Git repositories via git config command, git config -- global user.name, and then you have to mention your username, and same procedure for email, right? Awesome. So मैं इधर पे इतना जंप नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं हैक्टोवर फेस्ट में क्या क्या होता है वो आपको बताऊंगा, राइट? कूल। सो कम टू my GitHub. Now I will show you how you can contribute, right? So this is the main project of our community. This is EduHub community's repository. So you can see our website. Just a second, it's loading. I will explain you the steps. So there are several issues and the steps you have to follow to contribute in our project, right? There are 3 mentors in our projects, me and my 2 friends, right? And these are the contributors. Cool. And here you can see the issues. There are several issues open now. If you want to contribute, that we need a separate about us page. If you want to contribute in if you want to create a about us page for us, then you can raise a comment, right? There are several footer section and a team page. There are several issues you can just go and check it out, right? And there are several pull requests also, but they are not relevant. Okay, so that's why we are not merging in our main rep, right? So I don't know why it's not. Oh, okay, it's working, perfect, fine. So this is our project. So this is our website. So you can see the website is pretty simple and pretty cool, I guess, right? So if you think there is some bugs, there are some thing you can enhance, so you can just raise a issue. Awesome. And we will assign you the task. So this is our team section, and blog sections are dummy blogs, and this is our community partners. Okay, awesome. And this is footer section. That's the small project. Okay, so now if you want to contribute in other projects, so what you have to do, right? So what you have to do,
just click on here. I will put all the links in my description. Just check it, and you can find several projects. So this is Hacktoberfest participant repositories, right? There are several projects. So if you are a beginner, right, तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा कि मतलब थोड़ा हाइक वाला प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए. तो आप कैसे सॉर्ट करेंगे? फर्स्ट थिंग इज, सॉर्ट करने के लिए there are few steps. Best match, most stars, fewer stars, most folks. So आप लोगों को fewer की तरफ जाना है, क्योंकि आप लोग अगर beginners है तो आप high level project पे contribution नहीं कर पाएंगे. That's why you have to choose a fewer stars projects. So just click on that, right? Awesome. So you can see several projects. So आपको प्रोजेक्ट में दिखना क्या है कि हैक्टोबर फेस्ट लिखा होना चाहिए टैग के हिसाब से. अगर हैक्टोबर फेस्ट का टैग है देन दिस इज द रिलेवेंट. बट देयर इज ए मेन थिंग. डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस मत कीजिए, वो एक्सटर्नल हो जाएगा. डीएसए प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन मत कीजिए, वो एक्सक्लूड हो जाएगा. डीएसए प्रोजेक्ट्स आर नॉट इंक्लूड इन हैक्टोबर फेस्ट. Keep it in your mind, right? Awesome. So there are several projects. So now I will show you how you can push some code in your GitHub. ठीक है? आप GitHub पे अपना एक कोड को कैसे पुल कर मतलब पुश कर सकते हैं. So एक रिपोजिटरी कैसे क्रिएट होता है मैं आपको शो कराऊंगा. Right? For that you have to create a new repository. A new repository and then name it. I have a small project. I will show you the project. There is a source code. Let me just show you. Just give me a second. Live. Okay. Okay. Yeah. This is a small card project, like card portfolio. If I click on my YouTube button, then it's redirect to my page. This is my YouTube channel. You can see, right? Okay. Just cut it. That's the project. So I have to push the whole code in my system, in my repository. So उसका नाम देना पड़ेगा मेरे को, right? I think my screen is properly visible, guys. Okay, I don't know what's happening because कोई भी स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, कुछ भी फ्लो रेडी नहीं है. बस मैं कैमरा ऑन किया हूँ एंड लैपटॉप लेके बैठा हूँ कि आप लोगों को हैक्टोबर फेस्ट के लिए थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए, राइट? मेरे तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा. एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, if you want to contribute in my project, in our community project, then please welcome. आप आइए, कंट्रीब्यूशन कीजिए एंड मैं गारंटी देता हूँ आपका पुल रिक्वेस्ट में मार्च करूंगा. बट थोड़ा सा रिलेवेंट पुल रिक्वेस्ट डालिए कि एक स्पेस हटा दिया, एक नेम ऐड कर दिया, ऐसे मत कीजिए, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा कुछ फीचर्स ऐड कीजिए, कुछ थोड़ा सा यूनिक कर दीजिए. आई विल श्योरली ऐड इन आवर मेन रेपो, ठीक है? ये मैं गारंटी देता हूँ. एक्सेप्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट, आई हैव टू प्रोजेक्ट्स. ओके, उधर पे भी आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक है ई लर्निंग प्रोजेक्ट और दूसरा एक सिंपल कार्ड प्रोजेक्ट, ठीक है? आई विल शो यू. ओके, जस्ट ऐड अगेन. कूल. नाउ cool cool what is my, yeah, so name profile card, ठीक है? ठीक है, and create a repository. Awesome. So first thing first, back to my, here I have to copy all the things. Okay, sorry, there is a license part, I guess. So just remove these things. Control C. I have to create a file in my desktop. Click on folder and name it card. Awesome. Okay, paste it over here. Now right click on that and click on git bash here. I think screen is properly visible, right, guys? Git init to initialize my empty git repository. Now there are several
like you can say there are several command you have to put, right? So first thing first, I will copy this remote thing and I will explain you what is this. Okay, okay. So, oh sorry, this is another get bash. Okay. So now I have to check the status. For that you can see avatar.png, fb.png, they are not committed yet. So first thing first, git add dot to add all the files. Now I will clear the screen. Okay, git commit minus m added my profile. I have to add a comment. Then hit the enter button. Now check status again. You can see on branch master nothing to commit. Okay, now my files are in on the branch, master branch. So what is master and what is main? If I want to explain now, so it's very difficult for me to make this, right? बहुत सारा चीज है, ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है, मेन ब्रांच क्या होता है, सेपरेट ब्रांच क्या होता है, अभी एक्सप्लेन करने जाओ तो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि व्हाट इज ब्रांचिंग. ब्रांचिंग का जो कॉन्सेप्ट है उधर पे एकदम क्लियरली मेंशन्ड है. ओके, आप जाके उधर पे चेक कर सकते हो. वो एनिमेटेड एक कंटेंट है जहाँ पे आप ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, कैसे ब्रांचिंग होता है. सो नाउ आई हैव टू इनिशियलाइज विथ माय रिमोट मींस जो होस्टिंग है उसके साथ इस गिट को कोलैब कर देना होगा, मर्ज कर देना होगा, ताकि पता चले इस मेरा लोकल फाइल को कि हाँ इसको इधर पुश करना है, इससे इसके साथ एक कॉन्टेक्ट है, राइट. इसके लिए मैं इसके साथ मैं रिमोट को ओरिजिन के साथ मैं मर्ज कर दिया. Awesome. Now what I have to do? Git status again. STA TUS, right? On branch master, nothing to commit. So fine. I will clear my screen again. Now I have to push it. How can I push? Git push origin main minus minus force. Hit the enter button. Oh, source reference main does not match any. Git push origin main. There is some problem. Let me check it once. Um, oh, you have to create a branch a main. Okay. There is several steps. Sometime I forgot to write. Now git push origin main. I think now it's working. Let's see. Okay, okay. Now it's working. Working. Fine, fine. I think it's completed, right? Go to my repository and refresh this page. Yeah, yeah, done. Awesome. Now you can see all my files are in my remote, in my GitHub. So I have to host this. I have to host this. So how can I host? Profile card, go to GitHub pages, check it, and known to you can change it in main and root and choose a theme. Choose a theme, minimal, and select the theme. Oops, there is some problem. What is this? What is this? What is this? Okay, there are some sort. So let me open again my GitHub. Okay, just wait a minute, guys. I will check it. What's the difficulty? Sahitya and 70-40% erase. Profile code. Oh, okay, okay. Go to settings. Again, I have to do for uploading, for hosting this site, right? Okay, I think it's completed. You know,
There is a problem, I guess. Okay, for main, I forgot to change it. छोटा सा मिस्टेक था. Now I think it's working. No, what's the issue, dude? Oh, now it's working perfectly. So this is the project. Okay, so if you want to contribute on my project, I will show you how we can contribute in my project. So here is my GitHub profile. Okay, guys, I will show you clearly. Okay. So practice session. What is? Oh, there are too many. Yeah, मिल गया. Cool. So this is the simple website. एकदम सिंपल सा वेबसाइट है. ठीक है, मैं दिखाता हूँ ये वेबसाइट में क्या हो रहा है एक्चुअली. So this is the simple website. You can add your picture, you can add your social links and your designation. This is the project. Simple project. So you can add your card and this is your open source contribution for Hacktoberfest. It's pretty easy. What you have to do? Here you can see the source code. Just copy it. Just copy it. हो गया कॉपी. हो गया. कंट्रोल सी से आप कॉपी कीजिए. कर लिया मैंने कॉपी. देख लिए. Awesome. Now what I have to do? Fork the repository. Fork in your name, right? And then go to index.html. So मैं अगर आपको इसको गिट हब मतलब गिट की मदद से अपना लोकल पे लाके फिर कंट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. तो मैं इधर पे शॉर्टकट आपको दिखा रहा हूँ. आपको क्या करना होगा, आपका जो पिक्चर है वो इमेज वाला फोल्डर पे डालना पड़ेगा एंड इधर पे जाके आपको अपना कोड को अपलोड करना होगा. सो फॉर दैट क्लिक ऑन हियर एंड पेस्ट इट. हो गया पेस्टिंग. oops, there is a problem. Okay, just commit and create a pull request. सिंपल, एकदम सिंपल है. अगर आपको पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करना है, आई बटन पे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक है, जाके आप चेकआउट कीजिए. फुल गिट एंड गिटहब का ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, आप जाके सिर्फ चेकआउट कीजिए. ये जो वीडियो है सिर्फ कंट्रीब्यूशन का है. क्या क्या प्रोजेक्ट्स है हैकटोबरफेस्ट में, क्या क्या सीन होता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और कुछ नहीं. ठीक है, एक कार्ड मैंने ऐड कर दिया है. आई गेस होस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. लेट मी चेक इट वंस. नहीं आया. ओके, लिव. ओके, दैट्स द सिंपल प्रोजेक्ट. इसका जो लिंक है मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. ऑसम. नाउ देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट. दिस इज ई लर्निंग साइट. वेट अ मिनट, आई विल शो यू. अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं सब्सक्राइब करने को बोलता नहीं हूँ, बट यार आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी कंटेंट बनाने का ट्राई करता हूँ. तो थोड़ा सा देख लो यार, अच्छा लगता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं ना. ई लर्निंग साइट. ठीक है, दिस इज अंडर Hacktoberfest. You can see the tags. Awesome. So what is the project? This is the complete e-learning site where you can see all the projects in free of cost, all the courses in free of cost. Okay, as one more thing, if you अगर आप कंट्रीब्यूटर हो जाए हमारा कम्युनिटी का, तो आई विल प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट एज वेल एज स्वैग. अगर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हुआ तो आई विल प्रोवाइड यू फ्री स्वैग. दैट्स माय प्रॉमिस. ओके गाइस, so here you can see the project. This is the project. Awesome. There you can see the blog side also here. Sorry, there's a create blog option.
My network is pretty slow. Yeah, this is the blog site. Okay, so if you want to contribute in this project, most welcome. Please come and contribute. Raise the issue and start working. Okay, so this is simple thing, and there is Hacktoberfest. If you click on start hacking, you can see Sahitya's profile. Okay, 4 in progress, 4 pull request progress हो रहा है. As I am the maintainer of this 3 project, so maintainer का अभी तक पता नहीं है, इधर पे डैशबोर्ड पे अपलोडेड नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम अपलोड हो जाएगा या फिर वो लोग डायरेक्ट ईमेल करेगा. इधर पे जो 4 लिखा हुआ है ये एज ए कंट्रीब्यूटर लिखा हुआ है. मैं किस प्रोजेक्ट पे जाकर कंट्रीब्यूशन किया हूँ अक्टूबर फेस्ट की दौरान, तो उसका एक रिपोर्ट है. बट एज मैं अक्टूबर फेस्ट में एज ए मेंटेनर काम कर रहा हूँ. ठीक है. ओके, so there are some rules and regulation, you can check it. Okay, there are resources section, there are several resources section, right? Maintainer guide, quality standards, participant guide, beginners guide, event organizer guide, so you can go through all the guide. मेन थिंग इज आपको 4 हेल्दी पुल रिक्वेस्ट सेंड करना है, ना कि स्पेस को ऐड कर दिया, एक हैश ऐड कर दिया, एक स्लैश ऐड कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर दिया. वो लोग को उसको हम स्पैम बोलते हैं. वो सब मत कीजिए. दैट्स द थिंग. सो if you want to connect with me on LinkedIn, you can follow me. Just search on Sahitya Roy in Google and you can find my all social links. That's the thing. Okay, I hope सब कुछ क्लियर है. If you want to contact with me and if you want to gain some knowledge about Hacktoberfest, then please feel free to contact with me. And डिस्क्रिप्शन में सब लिंक में डाल दिया हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड कीप कंट्रीब्यूटिंग एंड कीप लर्निंग. दैट्स द मेन थिंग. आपको लर्न करना है, साथ साथ कंट्रीब्यूशन भी करना है. ओके, सो सी यू हैव अ नेक्स्ट डे. सी यू हैव you in a next video. तब तक के लिए say have a good day, take care, bye bye, and stay safe, stay at home, and enjoy Durga Puja, and keep contributing in Hacktoberfest. Bye bye, guys.